Hello and welcome to the Blockchain Boys podcast. Here with me is Mirza Mujtaba, the first Hola. bodybuilding NFT artist, and I here am a blockchain developer, Ali Solanki. So let's start with this. And आज हमारे साथ में बहुत सारे news है, crypto news, especially about WAZIRX and Binance. Then there's Solana hack that had happened, and there's a lot of things that we'll be talking about. So let's start with the first one. India freezes assets of Binance's Indian exchange WAZIRX. अब ये Binance's Indian exchange है कि नहीं ये हम आगे पता करेंगे बट बहुत कुछ हो रहा है WAZIRX के साथ में निश्चल भाई ने भी बहुत ट्वीट्स किए हैं CZ ने भी हमारे बहुत ट्वीट्स किए हैं यहाँ पर. So for those of you who don't know who Nishchal is, he's the founder of WAZIRX. Yes. And there has been some really bad blood going between WAZIRX and Binance. तो जिनको पता Yeah. नहीं है, WAZIRX was sort of like India में Binance के साथ tied up एक crypto exchange था. तो और नॉर्मली लोगों को बहुत कन्वीनियंस था. नॉर्मली लोगों को बहुत कन्वीनियंस हो जाती थी कि वो ट्रेडिंग जो फीस लगती है बिटवीन वन एक्सचेंज टू अनदर और लोकल करेंसीज में फिर लोकल एक्सचेंजेस में लाने के लिए वो क्योंकि बाइनेंस से लोग सीधा WAZIRX के साथ WAZIRX में विदाउट एनी फी ट्रांसफर कर सकते थे अपने क्रिप्टो एसेट्स. इसलिए लोगों को बहुत उसमें आसानी होती थी. एंड WAZIRX was by far is still by far one of the most widely used crypto exchanges in India, which is like the second largest population in the world. और for truly right reasons, जो Binance है, which is Chinese founded, right, had to team up and take over the next big population threat that was India. It's not registered in this thing. It's not registered in China. Though. Yeah, I believe it's registered in Singapore, right? Binance? No. It's something else. Let's search. Where is Binance registered? Obviously, I think it's some island or something. हाँ क्या? Cayman Islands. It's some ऐसे ही कोई island है. Tax haven. Tax haven. So yeah, basically, that's the scene that WAZIRX was used by widely by people in India because of I was trying to find like WAZIRX ka reference over here. I think they've removed it or something. I'm not sure. क्योंकि मुझे दिख ही नहीं रहा है WAZIRX यहाँ पे. अच्छा, does Binance own only WAZIRX or do they own any other crypto exchanges in other countries? I think it owns other exchanges as well. So basically what they do is Binance as a whole is like a global exchange, right? Right. अब INR pairs को जब transfer करना है तो they only have, for example, they have P2P, right? Which is if I want to buy USDT and say for example I have, okay, whatever it is, I want to buy it through INR. So I can do that. I can actually buy any kind of cryptocurrency using my INR rupees. But then I'll be buying it via a person. For example, here is Naveen Crypto, then there's Nikki or whatever. But these are people who already have USDT with them, which is he has say 170 USDT and he's setting a price to it. And we will basically be paying that person वो प्राइस. तो अभी सीन कैसा है कि अगर तुम्हें एक्सचेंज से बाय करना है, बाइनेंस से बाय करना है, बाइनेंस फिएट करेंसी नहीं लेता है, स्पेशली INR नहीं लेता है, दूसरे शायद से लेता है वो. तो इसलिए उन्होंने क्या कर दिया कि WAZIRX के साथ टाई अप कर दिया है. सो नाउ इफ यू वांट टू बाय क्रिप्टो करेंसी तुम WAZIRX को बोल सकते हो कि मेरा INR ले लो, तुम मुझे क्रिप्टो दो, और फिर क्रिप्टो को यहाँ पर तुम ट्रांसफर कर सकते हो to Binance without paying any fees. So वो एक बहुत ही अच्छी चीज है. यहाँ पे मुझे WAZIRX दिख रहा है शायद. WRX is WAZIRX, right? I guess so. हाँ, because obviously INR P2P कर रहे हैं ना यहाँ पे ट्रेडिंग.
Hmm. तो बेसिकली वी आर बाइंग WRX टोकन्स और फिर वो WRX Yeah. टोकन्स भी बाइनेंस में बेच सकते हैं। तो ये WAZIRX का Yeah. नेटिव टोकन है। सो बेसिकली क्या होता था, टू कीप इट सिंपल एंड प्लेन, इज दैट लोगों के लिए बहुत सहूलियत हो जाती थी कि दे कैन इजीली बाय क्रिप्टोज विद देयर INR एंड देन ट्रांसफर दोज क्रिप्टोज टू अ ग्लोबल एक्सचेंज एट अ लाइक at the top, which is Binance, and Yeah. use their crypto at their ease with different protocols or DAOs or wherever they had to, or even just for trading, to have an international pool of coins available to them that were listed at a big level in Binance. So Hmm. basically, WazirX was and is still one of the top exchanges, crypto exchanges in India. बट रिसेंटली क्या हुआ इज दैट देयर हैज बीन सम बैड ब्लड। ये जो एक्विजिशन थी ये स्टार्ट हुई थी सपोजिटली इन 2019, Yeah. way before even the actual crypto boom came. So ये चीज़ें तब से अवेलेबल थी, लाइक ये दोनों प्लेटफॉर्म्स WazirX और Binance तब से एक्टिवली एक दूसरे के साथ पार्टनरशिप करने के प्लान्स रख रहे थे। Yeah. और यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं, देयर इज अ प्रॉपर स्टेप एंड गाइड टू इजीली Yeah. ट्रांसफर tokens between WazirX and Binance to and fro Yeah. without losing any tokens in any kind of gas fees or any kind of platform fees. Yeah. So There's no. Yeah. या सो क्या कहते हैं इसको, रिसेंटली क्या हुआ कि इंडियन गवर्नमेंट ने बाइनेंस के एसेट्स फ्रीज करने का कुछ स्टैंस लिया है, और बाइनेंस के जो भी एसेट्स इंडिया में हैं या होंगे आर टाइड इन थ्रू WazirX, राइट? Actually, Binance, because Binance is registered through Cayman Okay. Islands, right? Okay, So okay. Indian government can do something about Binance also, but Right. they choose not to, right? Because वो Yeah. registered in India में, WazirX India में registered है. So now they are freezing assets of WazirX, Okay. and because Binance was tied up with WazirX, और WazirX तो यही बोल रहा है कि दोनों tied up थे and they are a part of Binance and stuff like that, whereas Binance is saying कि वो तो कभी WazirX के साथ में partner किया ही नहीं था, and they are completely putting it off कि ऐसा कुछ हुआ था, हम लोग WazirX के साथ में कुछ पार्टनर्ड अप है, हमारा बस ट्रांसफर वाला थिंग है. वील टॉक अबाउट दैट इन दिस पर्टिकुलर ट्वीट जिसमें This sounds बोला like गया है. sounds like a classic bad breakup. एग्जैक्टली एंड अभी क्या हो रहा है, बिकॉज WazirX इज इन अ वेरी बैड सिचुएशन एट दिस पॉइंट. पीपल आर सेइंग कि Binance इसलिए ये चीज कर रहा है एंड इसलिए वो ऐसे बोल रहा है कि they don't own it. But let's look at it from all perspectives. Okay. So यहाँ पर अभी तुम देख सकते हो, ED ने, India's ED has frozen $8.15 million in bank deposits belonging to Zanmai Lab. So Zanmai is the company that owns WazirX. Okay. WazirX. एंड ये चीज बोली गई है कि ये सब मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंडर है. सो मनी लॉन्ड्रिंग इज लाइक you take you don't pay taxes basically. You can understand it in a very simple format like that. तो अभी क्या हो रहा है कि WazirX तो बोल रहा है कि this is all Binance's money and Binance ने पूरा कंट्रोल किया है, उनका ही पूरा Blame it's game. all लेकिन नहीं, लेकिन Binance बोल रहा है कि ये पूरा WazirX का जिम्मेदारी है. they have to look into it and ये सब चीजें हो रही है. So yeah, what do you think? WazirX के डायरेक्टर ने भी बोल दिया है कि they have complete actually उनके घर पे कुछ रेड हुई थी. Okay. इस समीर मात्रे के घर पे हुई थी and they found that he has complete remote access to the exchange's database, but he refused to hand over the details to ED. So this is a classic case of, is Web3 truly decentralized or is it still centralized? तो उन्होंने बेसिकली अपने जो कस्टमर्स या यूजर्स है उनके डिटेल्स नहीं दिए इंडियन गवर्नमेंट को कि कहाँ पर जा रहा है पैसा,
कहाँ से आ रहा है, एंड दे वर लाइक ये सब ब्लॉकचेन पर है, हमें ज्यादा कुछ पता नहीं है, एंड वी डोंट हैव एनी काइंड ऑफ रिकॉर्ड्स फॉर ऑल ऑफ दीज थिंग्स। बट बाद में ईडी ने जब रेड की थी तो उन्हें पता चला कि ही हैज कंप्लीट रिमोट एक्सेस, वो बस झूठ बोल रहा है कि वाह। एंड आई एम स्टिल नॉट श्योर कि ऐसा था, बट दिस इज व्हाट हैज बीन देयर इन द न्यूज़ लेटली। अपार्ट फ्रॉम दैट ये भी चीज हो रही थी कि जो केवाईसी होते हैं, राइट, नो योर कस्टमर, फॉर राइट। एग्जांपल व्हेनेवर यू लॉग इनटू से WAZIRX, तुम्हें एक पैन कार्ड का डिटेल्स डालना पड़ता है, आधार कार्ड का डिटेल्स डालना पड़ता है। सो दैट वे WAZIRX को पता है कि वो वॉलेट के पीछे कौन है। Now these KYC things were also not properly done, or they didn't have the records for it. At least that's what WAZIRX is saying कि हमारे पास ये सब details नहीं है customers की, हमारे पास वो सब नहीं है, and they are not giving those details to the Indian government at this point. Right. So and also non-recording of transactions on the blockchains to save cost. So as we just now talked about कि WAZIRX से हम लोग जब Binance में ट्रांसफर करते हैं या Binance से WAZIRX में ट्रांसफर करते हैं, we don't have to pay any kind of gas fees. Right. अब gas fees इसलिए नहीं होती है क्योंकि वो ट्रांजैक्शन ब्लॉकचेन पे जाता ही नहीं है. So it's like it's there on the same wallet. It's just एक एप्लीकेशन से दूसरे एप्लीकेशन में सो बेसिकली ये कॉन्सेप्ट अगर मैं विजुअलाइज करके समझूं, यू हैव अ बाइनेंस वॉलेट एंड देन यू हैव अ WAZIRX वॉलेट, राइट? तो हम लोग को क्या लगता है जब हम WAZIRX से बाइनेंस में ट्रांसफर कर रहे हैं कि हम लोग एक वॉलेट से दूसरे वॉलेट में ट्रांसफर कर रहे हैं, बट इन एक्चुअल रियलिटी बैक एंड पे क्या हो रहा है कि ये एक ही वॉलेट है. बस ये जब तुम्हारे WAZIRX के सिस्टम में जो उनके ऑफ द ब्लॉकचेन रिकॉर्ड्स है, वहां पे जब दिखाता है कि यू आर स्टिल इनसाइड द INR WAZIRX सिस्टम, तो तुम्हारा क्रिप्टो खाली WAZIRX पे डिस्प्ले हो रहा है, राइट? एंड वंस यू ट्रांसफर इट टू बाइनेंस, ट्रांसफर इट वाया ईमेल और Web2 to Binance, then on the Binance display it shows your crypto, right? So basically it's just inside one, and it's just a game of a front end which does not show your a back end system which does not show your crypto in Binance's front end or WAZIRX's front end unless it is in the respective wallets, right? Yeah. So damn, man, wow. So this is turns out WAZIRX is a Web2 company. And there is of course, all of these central exchanges, centralized exchanges, all of them are Web2 companies itself. But they try to portray themselves कि हम ब्लॉकचेन पे डाल रहे हैं, सब पूरा क्लियर है. यूजुअली इट इजंट, क्योंकि ऑब्वियसली वो लोग अगर ये सब चीजें करने लग जाएंगे, लोगों को गैस फीस भरनी पड़ेगी, एंड उन लोगों को भी प्रॉफिट नहीं होगा, बिकॉज ऑब्वियसली दे आर टेकिंग सम परसेंटेज ऑफ फ्रॉम द ट्रांजैक्शंस. एवरी ट्रांजैक्शन दैट यू मेक, लोग एक परसेंटेज लेते हैं. दूसरी बात, यहाँ पे बात हो रही थी, ईडी वाज प्रोबिंग WAZIRX for allegedly assisting Chinese-run online sports betting operations, looking to funnel hundreds of millions of dollars of illegal gambling outside country. तो मतलब क्या हो रहा है अभी देखो. हाँ, और दूसरी बात क्या हो रही है अभी, यूजुअली एक्सचेंजेस, हाउ डू दे मेक मनी? अभी समझो तुमने कोई एक ट्रांजैक्शन किया, तुमने INR से क्रिप्टो खरीदा, बिटकॉइन खरीदा समझो, राइट? तो वो ट्रांजैक्शन पे उन लोग एक छोटा सा परसेंटेज ले लेते हैं फ्रॉम द यूजर, राइट? अभी वो इतना छोटा परसेंटेज होता है और ट्रांजैक्शन इतने बड़े नहीं हो रहे, ज्यादा से ज्यादा मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ डॉलर्स में हो रहे रहेंगे, बट उसका एकदम छोटा परसेंटेज उनको मिलता है, 0.1%, 0.01% और समथिंग लाइक दैट. तो उधर से तो पैसे आते नहीं उनको ज्यादा. सो नाउ हाउ डू दे मेक मनी? द वे दे मेक मनी इज बाय doing what the bank does. अभी बैंक के पास तुम पैसे जमा करते हो, तो बैंक फिर आगे वो लोन दे देता है किसी और को, एंड फिर उस पे से इंटरेस्ट आता है, एंड उधर से वो लोग मनी बनाते हैं. एंड दैट वाज द एग्जैक्ट थिंग व्हाई वी वेंट ऑन टू क्रिप्टो, क्योंकि हम लोग बैंक्स को ट्रस्ट नहीं करते हैं. हम लोग ये नहीं चाहते कि कोई और हमारा पैसा किसी और को दे दे, एंड फिर वो पैसा वापस से ना दे तो हमारे पास पैसे रह गए, राइट? जैसे
जैसे True. विजय माल्या ने वो सब किया था, देन वी हैड सो मेनी स्कैम्स राइट इन इंडिया. सो इसी वजह से वी वेंट ऑन टू क्रिप्टो के अभी हमारे पास रहेगा जो भी क्रिप्टो है दैट इज ओन्ड बाय अस. सो वो Right. ओनरशिप की चीज आ गई थी. बट देन नाउ बिकॉज ऑफ दीज centralized exchanges, what happens is now when you put it in, not all exchanges but WazirX पे ये allegation आया है कि जब तुम अपने क्रिप्टो बाय करते हो या पैसे डालते हो WazirX पे, तो WazirX फिर वो क्रिप्टो या पैसों को कहीं और यूज करता है इन ऑर्डर टू गेन मोर प्रॉफिट्स. Yeah. नाउ बिकॉज वो वॉल्यूम इतना ज्यादा है तो पैसे बनाना इट्स वेरी इजी फॉर देम, बिकॉज वो जहां पर भी डालेंगे उधर का पूरा मार्केट ही चेंज हो जाएगा इतने पैसों से. Right. And it's alleged that they were using this money for online betting operations in China, Right. and hundreds of millions of dollars were being used for these illegal gambling, and this was all outside India obviously. So ये acquisition अभी लगा है. And फिर तो ये लाइंग गेम के बारे में हम बात Blame करते हैं. game, lying game. ब्लेम गेम. तो अभी तो हमें पता चल गया कि व्हाट्स द होल सिचुएशन एज, राइट. वी नो दैट ओके, पैसे हमारे जो डिपॉजिट हो रहे थे वो कहीं और यूज हो रहे थे जो इलीगल था, एंड दे वर पोर्ट्रेइंग एज कि हमारे पास ही पैसे हैं, हम किधर और नहीं डाल रहे. नाउ ये एलिगेशन क्लियर हो गया. सो नाउ WazirX पे ये एलिगेशन आया था, और WazirX क्योंकि बिनांस ओन्ड है तो बिनांस पे भी ये एलिगेशन आ गया. तो बिनांस ने एक स्टेटमेंट जारी कर दिया. ओके, दिस स्टेटमेंट गोज लाइक दिस, एंड दिस इज द CEO ऑफ बिनांस स्पीकिंग ओवर हियर. Okay. So Binance does not own any equity in Zanmai Labs, the entity operating WazirX and established by the original founders. Here we go. Here we मतलब go. उन्होंने बोल दिया कि हमारे पास 1% भी नहीं है WazirX का हमारे अंडर, एंड वी डू नॉट ओन एनीथिंग. एंड फिर My उसके आगे God. थोड़ा पढ़ोगे तो ही टॉक्स अबाउट कि कैसे ये सब चीजें आई थी. सो 2019 में, नवंबर 2019, Binance published a blog that it had acquired WazirX. Okay. Now everyone knows that it is, you know, Binance के साथ में ही है. Binance and WazirX are just one and the same One thing. and the Binance same thing. owns Yeah. it. Yeah, but they are saying this transaction was never completed. 2019 की बात है, ये 3 साल पहले की बात है. Binance has never at any point owned any shares of Zanmai Labs, the entity operating WazirX. My मतलब God. अब तक जितनी भी बार हम लोग ये सब सुनते आ रहे हैं, and even CZ has tweeted about it a lot कि WazirX is Binance owned. For example, Okay, guys, just a in second, just pause. For those of you who don't know who CZ is, he's the founder, owner of Binance, owner, whatever you like yeah, to call him, CEO of Binance, yeah, and big Bitcoin maximalist, and yeah, big BNB maximalist also, you could say. yeah. But yeah, Obviously it's his. obviously. DNB तो इनका ही है. But yeah, you can go on, bro. So यहाँ पर तुम देखोगे कि on 5th April 2021 he has tweeted, and this is not the only time. ऐसे Yeah. बहुत बार उन्होंने ट्वीट किया है कि Binance owned Indian crypto exchange WazirX. What does this mean? Wow. WazirX is owned by Owned Binance, by Binance, right? right? Yeah, even if they say कि चलो हमारा percentage बहुत low है, that makes sense. Yeah. कि चलो उन्होंने बोला कि they don't own a very big share of WazirX or Zanmai Labs which owns WazirX. That makes sense, but they are literally saying कि उनके पास कुछ कुछ भी लेना नहीं देना है. ही नहीं है. Exactly, they don't have any shares of Zanmai Labs, which just does not make sense because यहाँ पे भी उन्होंने बोला है. ऐसे में बहुत सारे examples दिखा सकता हूँ जहाँ पे उन्होंने clearly state किया है कि WazirX is Binance owned. Wow, So man. उसके आगे बात करते हैं. Now he says कि WazirX के जो wallet services थे, that was just as a tech solution. मतलब हम लोग जो अभी बात कर रहे थे, which is Oh. Binance से WazirX पे ट्रांसफर करना क्रिप्टो, और
WazirX से Binance पे ट्रांसफर करना, that is termed now as tech Tech solution. solution. So basically they are saying that Binance just leverage their system of WazirX's Yeah, system of P2P yeah, in order for their gain, in order for more people to come into their system. And if yeah, I'm not wrong, that means the wallet that was being shown on WazirX is actually a Binance wallet and not a yeah. You can WazirX say that, created yes. wallet. And that's not a WazirX created wallet which Binance is using to show on their screens. It's a Binance Yeah, wallet which WazirX is using to show on their screen. I think that's what the gamble is. मतलब वो gamble की होगी ने इन लोगों ने कि तुम हमें yeah, P2P दो, हम लोग हमारी वॉलेट या जो भी हमारा मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर है वो आपको देंगे, जो भी ब्लॉकचेन टेक का आपको चाहिए होगा. yeah, So I think Binance might have started out trying to make their own tech and their own pool of liquidity and stuff like that. But over hmm. time, they might have given that up over to Binance. Sorry, WazirX might have given that up WazirX. over to Binance with their big presence in the market in terms of liquidity and also coin listing. Let's Hmm. talk about coin listing for a second because I feel that that's also a big way exchanges earn their money. For example, अगर local coins हैं India के, like local कोई भी Inu coin या कोई भी shit coin कोई बना रहा है, and they still have to pay a huge listing fees even to get onto WazirX. Exactly. So that's like one of the big ways exchanges earn their money. And I feel Yeah, out of those, that listing fees also a big portion would have actually been going to Binance. yeah, If not, then Binance would have been uh, taking their service of P2P for free because they are able to earn that money from coin listings and stuff like that. And also brand deals, जो traditional brand deals है, ads हैं, hmm. बाकी चीजें हैं, उससे जो भी इनको local gain होता होगा, they might have been letting WazirX keep all that. So yeah, clearly Hmm. this is a case of मेरे मतलब जितना मेरी understanding है, मतलब artist understanding is that this is like a classic barter system kind of for services that Yeah, Binance has let WazirX use, and WazirX P2P and within the country banking system के साथ जो इनके leverage होगा इनका liquidity maintain करने का INR के terms में to offer that to yeah, people who are using Binance or trying to buy cryptos or invest is what is actually happening here. So yeah, cool. So that's Nishchal. That's I guess he's the yeah. So he was the CEO of WazirX. okay. He's the founder of WazirX, and now he's building another platform in itself. ये तो अलग ही चीज है, Wow. Shardium. But इन्होंने भी बहुत सारे tweets डाले हैं. Let's look at that as well. So यहाँ पर देखो, innocent till proven guilty has changed guilty till proven innocent. बहुत सारी चीजें हैं, but let's look at something over here. So deal involved Binance parent entity. After some media reports on Binance structure, we asked about it, and ambiguity वो सब चीजें हैं. So now what he's trying to say is that Binance actually owns WazirX. वो पूरा चीज उस पे डाल रहा है. एंड Binance बोल रहा है we don't own any part of WazirX. वही चीजें चल रही है यहाँ पे कि यहाँ पर ऐसे हुआ था, यहाँ पर वैसे हुआ था. यहाँ पर तुम देखोगे कि ओरिजिनल डील इंक्लूडेड सेल ऑफ WazirX टेक्नोलॉजी. सो WazirX जो पूरा एक्सचेंज है उसका सेल. Same technology was then licensed to Zanmai by Binance for INR market. Okay. तो मतलब सिर्फ इंडियन मार्केट के लिए Binance ने Zanmai Labs को WazirX का IP दिया था. Okay. Post licensing, Binance operates crypto to crypto trading, crypto deposits and stuff. Zanmai operates INR to crypto trading, INR deposits. तो मैंने जैसे बताया था कि Binance पे तुम जाओगे तो Binance पे तुम directly INR से कुछ buy नहीं कर पाओगे. Right. Any crypto. Right. And this is because they want to stay away from all of these things. Right. कि जैसे अभी ये ED का scene हो रहा है, so they want to stay away from all of these things, and that's why they then
go over to WAZIRX. Okay, guys, यहाँ पे मैं एक I have to clear 2 points first. So guys, जिनको IP का मतलब नहीं पता, IP means intellectual property. So intellectual property in the sense कि अगर for example मैं अपनी intellectual property अली को देता हूँ, he can use my face, he can use my services, he can use anything. Okay, so that's the meaning of giving intellectual property. And second चीज जो अली कह रहा है about like Binance like not being able to directly get cryptos on Binance. हाँ, Binance पे P2P system है, लेकिन वही P2P system जो आप use कर रहे हो that is going through WAZIRX. So that's the P2P system that we are talking about here. Binance का भी अपना system है, you can buy directly with INR on that P2P. और वही P2P system actually WAZIRX इनको supply करता है within the Indian demographic जो अपना है cryptos के लिए. Yeah, go on bro. So yeah, basically I feel like निश्चल ये by the way this was August 6th जो जिसका ये कोड ट्वीट कर रहा है वापस. So yeah, it's been quite some time man. Is he writing anything else there? So यहाँ पर फिर उन्होंने बोला है कि Zanmai operates INR to crypto trading, INR deposits and withdrawals. तो मतलब अभी समझो तुम्हें कुछ Binance पे खरीदना है INR के लिए, तुम्हारे पास रुपीस है पर तुम्हें क्रिप्टो खरीदना है. So what you will do is go over to an Indian exchange. तुम Binance पे डायरेक्टली नहीं जा सकते. अगर Binance पे डायरेक्टली जाओगे तो तुम्हें ये सब P2P करना पड़ेगा. Right. ये ऐसे लोगों से खरीदना पड़ेगा, बट Binance से तुम डायरेक्टली नहीं खरीद पाओगे. Right. अब जब तुम इधर जाओगे WAZIRX के पास या कोई और exchange के पास, usually these exchanges are tied up with a global exchange also. Yeah. So जैसे I guess coin which is that I forgot the name. Coin market cap or coin DCX? Yeah, coin market cap. Yeah. नहीं coin market cap नहीं, वो तो exchange नहीं है. But Coinbase is yeah, Coinbase is I think owning a part of, let's see, Coinbase Indian exchange. Yeah, I think वो उसका भी C से ही कुछ तो नाम है. मैं अभी पता नहीं क्यों नाम याद नहीं आ रहा मुझे. What is it? Coin DCX नहीं तो Coin switch Kuber. Yeah. Okay. Cool. So that's a classic example. So coin switch Kuber is not an exchange, right? It's yeah. So if you see Coinbase and coin switch Kuber, I think they are partnered up. 260 million funding. That's there down. It's there. Yeah, something like that. Yeah. So यहाँ पे देख सकते हो तुम कि उन्हें फंडिंग मिली है from Andreessen Horowitz. Is it Horowitz again? Yep, that's Andreessen Horowitz. Andreessen Horowitz, guys. जैसे कि आप लोगों ने लास्ट पॉडकास्ट में भी देखा होगा, फ्रैक्टल की भी फंडिंग इन्होंने ही की. This is a big funding. Like these guys, they fund like any and every project. They have filthy money. So it's not surprising. So yeah. तो coin switch Kuber जैसे मैंने बताया, Coinbase it does not have INR deposits or withdrawals directly. Right. But then coin switch has it. तो वो इंटीग्रेट कर देते हैं दोनों में. वही सेम चीज यहाँ पर भी हो रही है कि Binance के पास INR deposits या withdrawal का कोई सिस्टम नहीं है. But then they integrate it with an Indian exchange like WAZIRX in order to do that. And then फिर वो लोग क्रिप्टो का संभालते हैं. Right. So my understanding of what has happened now is once the Samir guy जो बंदा है उसको जो जब अभी इंडियन मतलब क्या कहते हैं authorities ने पकड़ा, so what actually happened is that now that we know that WAZIRX does not have any actual Web3 authority over the wallets or the people that they are actually having in their system right now who are using trading crypto directly via WAZIRX supposedly, should not be having any ownership or any information regarding wallets or any kind of authority over having the ability to transact or manage wallets, right? But now that he had remote access to be able to access these wallets or to be able to access that database, that is becoming a problem.
So as long Exactly. as he would have been in the he would have been having access to the P2P system or P2P database, which would be basically INR, to giving that money to Binance, to showing Yeah. that crypto to the people who are paying INR, which is basically P2P. That much is fine. But अभी जब उसके बाहर चला गया ये, now that he has Web3 authority over things, that is becoming a bit of a that becomes a bit of a scam then, in my opinion, obviously. And that also becomes away from the idea of decentralization, which we now know about it, in today's day and age. So yeah, it basically becomes another monopoly kind of banking system if we look at it in a certain way. बैंक ही बन जाती है, मतलब मैं तो बैंक बन जाती है बोलूँगा। ना फिर। एग्जैक्टली। और यहाँ पर तुम देखोगे, निश्चल शेट्टी ने भी ये बात की है, ये तो हम लोग ने बात की, बट बेसिकली ही इज आल्सो सेइंग कि भाई पूरा जो भी वजीरेक्स का ट्रांजैक्शंस एंड एवरीथिंग इज देयर, इट्स ऑल डन बाय बिनांस ओनली। एंड जो भी चीजें इफ यू वांट टू talk about it or whatever, the ED needs to probe Binance, not WazirX, is what they are trying to say. क्योंकि WazirX is owned by Binance and they are controlling all of it. तो यही इशू चल रहा है दोनों के बीच में अभी। एंड So over here, हाँ बोलो। I think yeah, Binance collaborates with law enforcement agencies all around the world, would be happy to work with ED in any way possible. So apparently they are trying. So Zhao sir, Zhao the CZ, the leader of Binance, is saying that Binance is ready to work with the ED, because they work with EDs all around the world, to sort of come to a conclusion कि यार कुछ तो बीच में सेटल कर देंगे, मामला सेटल कर देंगे। हाँ, that's what he's trying to do now. अब अगर वो हुआ तो सही है, नहीं हुआ तो I guess they're going to put the whole blame on WazirX and the way they handled this situation. So yeah, is there, like, I feel like this is a classic case of, again, like the biggest of the big names in crypto when it comes to exchanges and founders, all going down the drain when it comes to actually being able to maintain एक decentralized community जिसे हम कहते हैं, एक decentralized format of distributing money, वो ये लोग maintain नहीं कर पा रहे हैं। तो what do you think about this? Is this an other big win for the idea of Web 5? What do you think about this? अभी यहाँ पर तो मुझे लग रहा है कि see, the main problem is not that main problem is that people are putting their cryptos on a centralized exchange. Yeah. That's the main problem, right? They want easiness of doing things. अभी वो चीज नॉर्मल वॉलेट्स पे आई नहीं है, जैसे मेटामास्क हो गया या दूसरी चीजें हो गई। the easiness of buying cryptos and selling them whenever you want, and वो सब चीजें इतनी अच्छी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे समझो बिटकॉइन बाय करना है या मुझे इथेरियम बाय करना है, मुझे पहले जाना पड़ेगा यूनिस्वैप या ऐसे कोई एक्सचेंज पर which is decentralized. Right. I would have to set up my MetaMask wallet. I would have to first transfer some cryptos, जैसे USDT या जो भी है, वो मेरे MetaMask में डालना पड़ेगा मुझे, फिर वहां से बाय करके फिर मेरे MetaMask में आएगा। So that's a very long process. यहाँ पर कैसा होता है, WazirX पे एक अकाउंट बना दिया and you can directly buy it through your rupees or whatever it is. So इसलिए वो easiness के चक्कर में people are overlooking the security part of it. They are overlooking all of these things. दूसरी चीज यहाँ पे जो बात हो रही है CZ से, so Binance provides wallet services for WazirX. Okay. So just like we were saying, WazirX exactly as I thought. Yeah. Okay. WazirX domain is transferred to our control. That means WazirX का जो domain है, everything that WazirX is Binance. Okay. Yeah. We were given a shared access to the AWS account. AWS is Amazon Web Services backend pura. Okay, so yeah. So can you imagine, like, AWS is the most widely used backend service by all this. So a Web 2 company as powerful as Amazon does not even care about Web 3 because, like, the Web 3 needs Web 2, If there is no Web 2, there is no Web 3. That's as simple as it is.
एंड यहाँ पर वो बोल रहे हैं वी कुड शट डाउन WazirX, like they have that control over that, but we can't because it hurts users, Oh right? man. Now they play the good guy, huh? Exactly. You just look at the way he has formed all of these sentences also. Sad to see these have to be debated on Twitter. So And yeah, exactly my point कि ये सारी बातें ट्विटर पे हो रही है, they are not even meeting and like settling this inside, you know. That's why it's becoming an ED issue, because I feel like, okay, by the way, first, this is a classic Chinese imperialistic move ना. हम बंद कर सकते थे लेकिन हम नहीं करेंगे क्योंकि users. So तो yeah, यहाँ पर man. लिखा है Binance does not have any control on operations including user sign up, KYC और ये सब. तो basically they are saying अगर ED हमारे पास आए और वो पूछे कि KYC कहाँ पे है, तुम्हारे यूजर्स का डिटेल बताओ, कहाँ पे उन्होंने ट्रांसफर किया है, क्या किया है, वो बेसिकली ये बताना चाहते हैं कि हमारे पास नहीं है, हमारे पास आना भी मत, तुम WazirX के पास जाओ. ठीक है. This was never transferred despite our request. The deal was never closed. No share XFERS, पता नहीं वो क्या होता है. But after that he was saying the WazirX founding team maintained control of the operations of the platform. Binance never was given data or control of users KYC. We would love all of these things. Okay, so basically now Binance is directly reaching out to the ED that caught WazirX red-handed to sort of say that कि WazirX ने तुझे भी स्कैम किया, हमें भी स्कैम किया, let's work together. If they manage to, मतलब अगर इन्होंने ED को पटा लिया और कुछ ऐसा कर दिया कि मतलब Binance सीधा खुद इंडियन मार्केट में घुस जाए, that may be a big part of this. And यहाँ पर ED का प्रेस रिलीज है. Okay, so what ED is saying, अभी हम लोग ने Binance से सुन लिया सब चीजें, हमने WazirX से सुन लिया. Now we'll be learning whatever the ED has to say. So ED conducted searches on one of the directors of Zanmai Labs, which was what we were talking about, Samir, which owns the popular crypto exchange WazirX, and had freezing order to freeze their bank balances of 64 crore rupees. So उनके bank balances में जो भी पूरा freeze हो चुका है. ED is conducting money laundering investigations. ये सब तो चीजें हमने बात की. Now, various fintech companies backed by Chinese funds could not get NBFC license from RBI for carrying such lending businesses. If you would have seen Play Store पे या App Store पे बहुत सारे ऐसे applications हैं जो आपको बहुत जल्दी loans दे देते हैं, personal loans. Right. And then if you are unable to pay these loans, पहले तो उनको authority नहीं है to give these loans because they don't have NBFC license. Yeah, so यहाँ पर क्या हो रहा है कि वो जितने भी apps थे, जितने भी वो loan giving apps थे basically, जो illegal काम कर रहे थे, now these people whenever they made profits, what they did was shut shop and diverted away the huge profits earned using the above modus operandi. मतलब अभी उनको क्या करना है, यहाँ पे उन्होंने पैसे कमा लिए, उन लोग ने जितने भी पैसे जमा किए हैं ये सब इलीगल चीजें करके, वो अब उन्हें चाइना या दूसरे कंट्रीज में भेजना है. How would they do it? Obviously they would use crypto assets in order to do that. तो अभी क्रिप्टो में कन्वर्ट तो करना पड़ेगा ना वो INR को. रुपीस है, रुपीस को क्रिप्टो में कन्वर्ट करना पड़ेगा. तो अभी उन्होंने WazirX को यूज किया था in order to do this. So they transferred like maximum amount of money were diverted to WazirX exchange, and the crypto assets so purchased have been diverted to unknown foreign wallets. Wow. Now ED is saying ये foreign wallets जो है उनके details बताओ, उनका ये सब चीजें बताओ, which is fine, like सही बात कर रहे हैं कि ये सब लोगों ने scam किया है, they have done money laundering. Now you need to tell us कहाँ पे गए हैं, because money तो तुम्हारे पास भेजा गया था. Right. Now ड्यूरिंग ED इन्वेस्टिगेशन, तो उन्होंने फिर इन्वेस्टिगेशन चालू की, उन्होंने बोला WazirX को कि ये डिटेल्स भेजो नहीं तो हम बंद करवा देंगे. Yeah, so the company owning WazirX has created a web of agreements with Binance, वो Cayman Islands की है, सिंगापुर में ZTIB प्राइवेट लिमिटेड एक है, and to obscure the ownership of the crypto exchange. So basically WazirX जैसे हमें पता है it's not registered in India.
राइट, इट्स रजिस्टर्ड इन सिंगापुर, राइट? राइट, एंड वो जो कंपनी है सिंगापुर वाली, वो हम्म, है जेटाई प्राइवेट लिमिटेड. ओके, Okay. Earlier, their managing director Nishal Shetty had claimed that WAZIRX is an Indian exchange. और हमें भी पता है वो इंडियन इंडियन एक्सचेंज है, एक्सचेंज सब लोग बोलते हैं, बट मोस्ट ऑफ दीज एक्सचेंजेस, जितने भी इंडियन एक्सचेंजेस हैं, सब आउटसाइड इंडिया रजिस्टर हुए जाते हैं, यूजुअली इन सिंगापुर और दुबई, राइट, क्योंकि वहाँ पे टैक्सेस कम रहते हैं. Even this, what do you say, Web2 companies like Flipkart and stuff, फ्लिपकार्ट, they are या, also not registered राइट, in India. इंडिया, Now, but now Zanmay claims that they are involved only in INR crypto transactions, जो हम लोग ने ट्विटर पे देखा था. P2P, that's the And all P2P part of the transactions, right? exactly, but what ED wants is कि वो कौन से क्रिप्टो वॉलेट में गया है, जिनका ये बोल रहे हैं उनके पास रिकॉर्ड्स नहीं है, बिनांस के पास है. ओके, अभी WAZIRX वर्क्स फ्रॉम अ क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर, AWS, जैसे हमने बताया था, Amazon Web Services, and all employees work from home. ये बहुत ही फनी पॉइंट आया. The registered office is a 2-chair co-working WeWork space. मतलब WAZIRX का ऑफिस नहीं है. Even I think major exchanges, many of them, they don't even have a proper office. They are working from WeWork space. That's it. oh उनका my god, रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस भी होता है, वो वीवर्क का एक स्पेस का होता है. who knows, And that बैंगलोर बॉम्बे में पहली बात तो ऐसे रैंडम 2 बंदे बैठे हैं, that's basically exactly. WAZIRX. Yeah, and all Lol. crypto transactions are controlled by Binance. That is what Nishchal was saying, right? Oh my Which is god. again without any known office, any known employee, and rarely responds to queries on legal@binance.com. My god. Despite giving repeated opportunities, WAZIRX failed to give crypto transactions to the suspected fintech app companies and reveal the KYC of the wallets. मतलब वही चीज बता रहे कि WAZIRX ने ये सब जितने भी fintech companies थी, उनके डिटेल्स नहीं बताए, उन्होंने कहाँ पे ट्रांसफर किया है वो भी नहीं बता रहे. एंड अगर ये सब ब्लॉकचेन पे हो रहा रहता तो पूछने की भी जरूरत नहीं है, उन्हें पता ही चल जाता कि ये वॉलेट से ये वॉलेट पे गया है. बट बिकॉज दीज transactions are not recorded on blockchain. This is done internally, right? This is basically मारवाड़ी बनिया बैठा है ना, ऐसा पूरा दफ्तर लेके, हाँ कौन भेजा है, क्या भेजा है, नेक्स्ट लिखो. It's like that, right? Damn. Yeah, and यहाँ पे उन्होंने 2020 के पहले इन्फॉर्म किया था, they don't even have the records of the bank account. बैंक अकाउंट तो मतलब वो होता है ना, इट्स नॉट ब्लॉकचेन बेस्ड. वहां पे तो तुम्हें डिटेल्स पता ही होंगे, और केवाईसी करवाया तो पैन कार्ड के डिटेल्स भी पता होंगे. बट दे वर सेइंग दे डोंट हैव द रिकॉर्ड्स ऑफ दीज थिंग्स, and there is no check on source of funds of their clients. No EDD is done, no STRs are raised, nothing is done. तो मतलब उन्हें अपने यूजर्स के बारे में कोई डिटेल्स नहीं है, ऐसा वो लोग क्लेम कर रहे थे. अभी ईडी चुप बैठने वाला तो है नहीं, तो उन्होंने डायरेक्टर ऑफ WAZIRX एक्सचेंज समीर मात्रे, राइट, उनके घर पे एक रेड की थी. दैट वाज अप्रोक्सीमेटली 5 days ago. It was on 3rd August. But despite that, he is not providing details of the transaction. और उन्हें पता चल गया कि उसके पास complete remote access. Okay. Full database का remote access है WAZIRX, okay, and he has those details with him, but he is not providing it. Wow. The lax KYC norms lose regulatory control of the transactions between WAZIRX and Binance. तो वही कि WAZIRX और Binance के बीच में जो transactions हो रहे हैं उसके बारे में भी details नहीं है. Wow. And मिसिंग क्रिप्टो एसेट्स, तो ये सब जितने भी क्रिप्टो एसेट्स WAZIRX से ट्रांसफर होके कहीं और कोई और वॉलेट में गए थे, मोस्ट प्रोबेबली इट वुड बी अ मेटामास्क वॉलेट समवेयर इन चाइना और समवेयर, और वहां पे ट्रांसफर किए गए थे ये सब क्रिप्टो एसेट्स. नाउ दे जस्ट वांट टू नो द पर्सन हु ओन्स दोज वॉलेट्स, दैट्स इट. बट उसके डिटेल्स उनके पास है नहीं. वाओ. एंड 16 accused fintech companies and laundering, और ये सब चीजें बात हुई है. फिर 65 65 crore rupees lying with WAZIRX was frozen. तो ये पूरी स्टोरी है from WAZIRX point of view, from Binance's point of view, and then from ED point of view.
ED's point of view. Yes. Wow, man. I guess one of the things. Okay, you can stop sharing the screen for a second because it's too much. You have to like talk about this now. Yeah. So like one of the things we can conclude from this is like let's break it down in points. Okay, ki like Yeah. at the end of the day, it's very difficult for a truly decentralized exchange to function or to build itself to a point where there is a decent amount of people using their platform without the hassle of a centralized government in which they are functioning. I think Yeah. मे बी WAZIRX ने ये स्टैंड इसलिए लिया बाइनेंस के साथ पार्टनर करने का या ओपन थे ये चीज को बिकॉज दे न्यू दे आर गोइंग टू फेस अ लॉट ऑफ ट्रबल फ्रॉम द ईडी वंस दे हैव Web3 एक्सेस टू एक्चुअल क्रिप्टो, राइट? Yeah. सो दैट वाज वन ऑफ द रीजंस कि मुझे क्यों लगता है कि बाइनेंस ने WAZIRX ने ये चीज को ओपन थे इन 2019, ओके, एंड राइटली सो बिकॉज राइट नाउ दे आर फेसिंग द सेम प्रॉब्लम. और हम सब के दिमाग में ये था कि यू नो देर आर रीजंस जो आजकल हम देख रहे हैं, CoinDCX हो या बाकी एक्सचेंजेस हो, उनके साथ बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं. फंड्स निकालने में, ट्रांसफर करने में देरी हो जाती है, दिखता नहीं है. और जब हम फिर WAZIRX यूज करते थे, वी वर लाइक एवरीथिंग इज सो फास्ट, देयर इज नो प्रॉब्लम, दिस एंड दैट. एंड जब CoinDCX के राइटली जब वीडियोस भी बनाते थे तो वहां पे कमेंट्स भी आते थे कि यू नो यार पहले हमारा पैसा लौटा दो, UPI नहीं है. हाँ UPI नहीं है ये वो. बट नाउ वी आर रियलाइजिंग कि वो लोग एक्चुअली बाय द बुक्स चल रहे थे. यू नो दे आर एक्चुअली ट्राइंग टू मेक, इफ यू ट्रूली गो डू KYC, एक एक चीज करेंगे एंड ट्रूली क्रिप्टोज भी तुम्हारे अंडर ही फंक्शन कर रहे हैं, तुम्हारे लोकली ओन्ड वॉलेट पे काम कर रहे हैं, देन इट does take time to go from a centralized system of economy to a decentralized system. Yeah. But now WAZIRX का example लेके basically WAZIRX पूरा हवा में चल रहा था. That's what this means. Like WAZIRX was nothing but an idea, right? Which two random people in AWS Mumbai were running, right? that's what the image of WAZIRX comes to our mind right now, especially with the ED and all. WeWork. एक छोटे से WeWork में दो लोग क्या कि पुराना लैपटॉप लेके 10 टेराबाइट का 20 टेराबाइट का हार्ड डिस्क लेके सर्वर लेके बैठे हुए हैं वो लोग. So that's my opinion. So basically I mean like let's talk about it in this term ki if we were to give a suggestion to somebody who wants to start their own exchange in India, okay, regardless of whether it is registered in Singapore or Dubai or wherever it is, that's तो वो तो करना ही करना है. नहीं तो इंडिया में करेंगे तो भाई ऐसे टैक्स बिल ऐसे फटेंगे ना कि छोड़ो भाई, फिर तो लोग हमेशा तुम्हारे एक्सचेंज यूज करेंगे तो हमेशा बेयर मार्केट में ही रहेंगे लोग. हाँ, मैं बोलना चाहूँगा इसमें ना, if you are looking to build an exchange, why not go anonymous first off, and not make it centralized. Like try not to make it centralized at all. बहुत सारे decentralized exchanges हैं which do tons of transactions. एक तो DYDX ही हो गया. DYDX exchange is completely decentralized, and I'm not sure if it's completely decentralized, but till a certain extent it is. And वो पूरा ट्रांजैक्शन जो भी हो रहा है वो सब ब्लॉकचेन पे होता है, तो मैं मेटामास्क का वॉलेट कनेक्ट करना ही पड़ता है उनके साथ में. बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज व्हाई नॉट डू समथिंग सिमिलर टू व्हाट फ्रैक्टल इज डूइंग. उन्होंने अभी लास्ट वीडियो में हमने बात की, दे आर एडिंग द गूगल साइन इन, ट्विटर साइन इन. सो जो Web2 में सॉल्यूशंस ऑलरेडी है वो उन लोग Web3 में डाल रहे हैं, and then they are trying to bridge that gap. Why not do the same thing with exchanges as well? Centralized exchanges and decentralized exchanges में बीच का एक गैप बना दो ना, कि वो दोनों चीज कर पाए. वो INR से तुम्हारे क्रिप्टो भी बाय कर पाए, थ्रू P2P भी हो तो P2P को थोड़ा इजी बना दो, उनको लिक्विडिटी ज्यादा दे दो, उससे P2P भी हो जाएगा, एंड यू वोंट हैव टू फेस दी हैसल के ये क्रिप्टोज हमारे हैं या ये फिएट मनी हमारे बैंक अकाउंट में आ रहा है. नहीं, वो हमारे में नहीं आ रहा है, दैट इज गोइंग टू समवन एल्स. वी आर जस्ट डूइंग द मीडिएटरी वर्क. तो वैसा कुछ आई फील कि अगर कोई एक्सचेंज बना रहा है, someone making something like that, I would say suggest that ऐसा कुछ करना चाहिए, right? Also, instead of doing completely centralized. Yeah, right, exactly. On that point also we touched on a point ki beech mein ki WAZIRX is basically a bank, you know, like it's basically a bank.
So one of the points I saw on the ED also, and which was like quite like open and out there, is that they only had 64 crores in assets, right? If you look at it, जो इन्होंने freeze किया, if you look at it, that's basically nothing. 64 crores, you convert it into dollars, it's like merely, it's nothing, right? So let's say in a case जहाँ पे मतलब this is basically how the bank works. They don't actually have the money to give you. They are using that money. They are giving that money as loans to people, putting it out there. बस तुम्हारे दिखाने के लिए तुम्हारे वॉलेट पे है तुम्हारे पास इतने INR के कॉइन्स या इतने, but it's not actually there. So it's basically a bank. So this shows us that it's truly not decentralized. आपका पैसा था ही नहीं वहाँ पे. अगर इनके assets freeze होने के थे, they would have frozen $200 million in assets, right? And that's not 64 crore rupees, right? That's $200 million to the minimum. 64 crores is only in the bank account. I feel unka koi assets bhi rahe. So that's my point, Ali. So if I were to say that give me my money back, WAZIRX, right now, they could not give me back more than 64 crores in actual fiat value, right? They could not promise me more than that. They might have used the leverage ki we are invested in this, we are invested in that, we will sell this asset, we will sell that asset. They don't even have a freaking office to sell, bro. They don't have an office even to sell. क्या बेचेंगे वो? Hard disk बेचेंगे वो लोग? 2 लोगों का employee का तनख्वाह कम करेंगे वो लोग? But that's not how it's going to work. So this is basically again a very centralized thing that has gone on right now, with access to decentralized money of people. So it goes away from the idea of money for the people, by the people. And ED's शक सही निकला, भले ही ED इस हिसाब से अंदर आया कि they might be working with Chinese teams or Chinese brands. They found out much more than that. They just found out this is a scam. So I hope, what do you think lies in the future now for WAZIRX? उसके बारे में बात करें. I feel if WAZIRX cooperates with the ED, things could go smoothly with them. Basically give them all the details, give them the details of the people who own the wallets, and give them the details of the users as well. तो अगर वो चीज हो जाए तो I guess they might be let off the hook. But यार ये Binance and WAZIRX का जो partnership and all of these things are there, that needs to be clarified to the users, because हम लोग जब WAZIRX use करते थे, it was mainly because of that specific thing कि WAZIRX से buy करो, ट्रांसफर कर लो Binance पे, and it's very smooth. Right. And Binance का तो हमें पता है, Binance is like the world's biggest crypto exchange. So we know the amount of transactions that they are doing and the amount of money that they have as well. So if that falls, that will be like catastrophic to the whole crypto thing. But that's why I'm hoping कि Binance won't fall. And that's why people trust Binance कि वहाँ पे सब crypto funds डाल दो तो वहाँ पे तो safe ही रहेगा. Now that does not mean कि वो जो crypto hold कर रहे हो वो safe है. That does not mean कि आप USD में save करोगे, Tether में save करोगे. It'll be safe. But what I'm trying to say, वो exchange अच्छा है. So yeah, rightly said, bro. जाते जाते one more thing we can touch on is like Binance ने अपने आप को इस पूरे सिचुएशन में सेफ रखा. So this is one of the things we can take away from Binance as a world leader or a global leader in crypto exchanges is that अब फॉर एग्जाम्पल अगर लोग चाहते भी हैं कि लाइक यार WAZIRX का बहुत बड़ा स्कैम हो रहा है, लोग डर के अपने पैसे पूरे निकालेंगे, बट नाउ पीपल नो दैट द वॉलेट इज एक्चुअली अ Binance wallet, so our money is actually safe somewhere. If WAZIRX can't return our money back to us, Binance surely can return our money back to us, right? What if Binance just takes away their hand and they say that, जैसे अभी बोल रहा है, WAZIRX, it does not own WAZIRX. So if users come over there and say कि हमारा पैसा कर दो वापस, they can do that. That's what the leader guy was saying, is that we can do that, but we keep users before anything. So then users will have a loyalty factor towards Binance. Binance could easily keep all of that money, fiat, crypto, whatever there is, to themselves. I would suggest is why hold your cryptos on WAZIRX? Like just मेरे पास भी बहुत सारे cryptos थे that were on WAZIRX, but I used to transfer it all on Binance. Right? Same. To keep it safe. Same. So एक बार buy कर लिया ना INR से, that's the whole purpose of, at least for me,
for WAZIRX, right? Right. मुझे INR से buy करना रहता था. It was the smoothest experience from all the other exchanges, Yeah. of course. UPI चलता था, सब चलता था. Now I used to buy crypto and then I just used to transfer it on Binance और Yeah. फिर वहाँ पर जाके मैं use करता था, store करता था, जो भी है, staking वो सब चीजें. But I never used to do it on WAZIRX because Indian exchanges पे if you are storing cryptos, you already should know it's a risk in itself. Yeah. Until and unless you also want to transfer it fast in INR और Yeah. वो सब hassle में पड़ना है, Hmm. तो it makes sense. But if you're just going to keep it in crypto, why not just keep it on Yeah. on the largest exchange, or even better than that, decentralized wallet. That's the Yeah. best thing. Yeah. So Like a वही है. MetaMask, right? MetaMask और even अभी तो Ledger wallets Ledger आ गए, wallets. crypto hardware wallets. Yeah. So why not keep it on that? Yeah. The only thing I kept on WAZIRX was Shiba Inu. And I had bought for Yeah. like 10 rupees and it went up to like 5,000 rupees and came back to 900 rupees. So I said, no idea. Yeah, but Still 90 actually. yeah, yeah, still. One of the things we need to remember in all of this is कि अगर आज को जाके WAZIRX अगर निकल भी जाती है, बंद हो जाती है, जो भी हो जाता है, कल को जाके Binance can take the Coinbase approach which they took with CoinSwitch Kuber to get some other exchange to do the P2P transactions for them, Yeah. and just keep that as transparent as it is that वो जो exchange है वो strictly एक P2P transaction exchange है. उसमें कुछ क्रिप्टो का इन्वॉल्वमेंट नहीं है. देयर इज नो वॉलेट्स दैट WAZIRX और द एक्स ब्रांड इन द फ्यूचर मे ओन. सो एज लॉन्ग एज दैट इज ट्रांसपेरेंट देयर शुड बी नो प्रॉब्लम. ईडीज के तो प्रॉब्लम्स होते ही रहेंगे एज लॉन्ग एज इफ यू स्टॉप स्पॉन्सरिंग लाइक चाइनीज games or like businesses with your name and title. So Yeah. other than that, guys, tell us what you think about this and we can move on to the next segment. We just have like 2 quick topics to cover which are on a lighter note. One is actually not on a lighter note. That's also a security issue which we are going to cover after this. But the last one is, I promise you that it's going to be good news for you guys, especially NFT lovers. I feel हमेशा जो NFT news होती है, there is something or the other happening. It's very good news, right? और जो भी क्रिप्टो Yeah. न्यूज होती है वो ऐसे पता नहीं बेयर मार्केट है या कुछ क्रैश हो रहा है. It's just Yeah. always disheartening, But yeah, so the next news we want to cover before our last news is the Solana wallet hack. As you guys might have known or might have seen, पिछले 3-4 दिनों में क्या हुआ कि there was a big infiltration in the Solana ecosystem. और ये बहुत सारे लोग कह रहे थे जो Solana यूज करते थे एप्स बिल्ड करने के लिए या अपने जो भी कॉइन्स बनाने के लिए. Solana was not a developer friendly, still not one of the most developer friendly platforms or technologies to build on. One of the biggest reasons ये थे जब हम बैंगलोर भी गए थे इसके लिए. और तन्मय भट्ट के जितने भी सुपर टीम डाओ के भी जब पॉडकास्ट निकलते हैं, ये वो लोग ये चीज डिस्कस करते ही करते हैं कि सोलाना की जो एक बड़ी वीकनेस थी हमेशा वाज सिक्योरिटी, राइट? सिक्योरिटी एंड सिक्योरिटी उनके लिए इतनी बड़ी प्रॉब्लम इसलिए नहीं थी कि बिकॉज दे फेल्ट दैट नॉट अ लॉट ऑफ पीपल नो हाउ टू यूज सोलाना इन द फर्स्ट प्लेस, राइट? तो कोई भी इंटरेस्टेड नहीं होगा उस हद तक जाने के लिए कि सिस्टम इन्फिल्ट्रेट हो जाए. बट ऑफ लेट क्या हुआ, लोगों के NFTs, लोगों के जो भी क्रिप्टो सोलाना के वॉलेट्स में थे, upwards of just finishing your whole wallet, draining it out of any crypto to losing like hundreds of thousands of dollars. हर एक के साथ, जिसके पास $100 या $50 भी थे उसके साथ तक भी ये स्कैम हुआ है, उसका भी निकले हैं, NFTs भी निकले हैं. तो मैंने अभी तक अपना सोलाना वॉलेट खोला नहीं है बिकॉज आई डोंट वांट दैट शॉक एंड आई फ्रैंकली डोंट केयर. आई हैडंट केप्ट एनीथिंग इन द सोलाना डिसेंट्रलाइज्ड सोल वॉलेट. But yeah, bro, what do you think about this whole catastrophe regarding like security breaches in Web3, especially ये जो Solana का हुआ? Do you have any like opinions on that? So I don't know the exact thing what had happened. मैं इतना news पे था नहीं, but I know this for sure कि Solana it's very much centralized, not decentralized like Ethereum or other blockchains. That is a major problem. And the second thing is that the programming language that it runs on, which is Rust, वो भी इतना मतलब डेवलप्ड है नहीं. सो उसमें भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं.
even Solidity is not that developed जो Ethereum use करता है. Right. But they are working on it, and वहाँ पे बहुत सारे developers हैं who are constantly fixing bugs and fixing all of those things. Any blockchain developer who wants to get into all of these things, they first learn Solidity. Right. Rust के साथ ऐसा नहीं है. Rust is very like primitive, and वहाँ पे छोटी छोटी चीजें करने के लिए भी तुम्हें कोड्स लिखने पड़ते हैं. It's not very developer friendly as you just pointed out. So इस वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, एंड नॉट जस्ट हैक्स, बट आई वुड आल्सो से कि सोलाना पर बहुत बार सोलाना ब्लॉकचेन ही काम करना बंद कर देता है. Right. सो लाइक यू कांट डू एनी काइंड ऑफ ट्रांजैक्शंस ऑन इट, एंड बीच में भी हुआ था आई गेस 6 to 7 hours तक पूरा आउटेज हो गया था. So all of these outages and things are happening on Solana from a very long time, but people are not seeing it. वो इतना न्यूज में आता नहीं है क्योंकि वो 6-7 hours के लिए होता है, and then people are like हाँ अभी तो चल रहा है, so it's all fine, but it's not. If you're transitioning from Web2 to Web3, Web2 पे तो मतलब मैंने Facebook को डाउन होते हुए खाली 1-2 बार देखा है. That's it. Like throughout like 5-6 years of me using it, I've rarely seen it go down. Or any other Web2 company like Amazon or whatever it is. They don't usually go down, and when people are coming from that place जहाँ पे comfort था, जहाँ पे कुछ down नहीं जाता था, सब smoothly चल रहा है, and then they come to Web3 and then they see कि Solana बार बार भी downtime दे रहा है, it's not working, your transactions aren't going, and this is like Web2 जैसा भी नहीं है. Web2 में we are not using our money, और हमारे पैसे डूब नहीं जाएंगे अगर कुछ downtime आ जाएगा तो. Right, but Web3 में everything is there related to money, because Solana का token अगर समझो तुम्हें sell करना है and you want to take out money from that, and अगर Solana blockchain ही बंद हो गया, so how would you do that, right? So that's a main problem, and that's why they've kept it centralized also, so that what they do is उनके पास एक समझ सकते हो एक switch है. So all the people they decide कि अभी Solana के transactions बढ़ रहे हैं, या there's a lot of like traffic on the blockchain because of which it's not working. They'll just clear all the transactions, restart the program, जैसे हम लोग phone को restart करते हैं, they'll restart it and then it comes back online. वैसा ही हो रहा है. And because it's centralized, that's why it's happening. But what if it what goes do you think what do you think is the reason of like this lack of efficiency in the Solana system or Solana's blockchain, if we say that it's not as powerful to withstand a certain amount of traffic or a certain kind of transaction, or run a certain kind of app, or run a certain kind of game, or a DAO or a DApp, whatever it is? Is it because of weak servers? Is it because of like lack of like just developer knowledge, or like lack of like the actual blockchain being built? Lack of validators actually. Okay. There aren't a lot of validators on the network. Okay. Ethereum has a lot of validators. अभी ETH2 जब आ रहा है, even before its launch, you can see on its website that it has, I think, over 1,000 validators or something. Validators, अगर आप explain कर सकते हो what validators are for our audience exactly? So whenever you send a transaction, जैसे Bitcoin पे कोई transaction भेजते हो तो proof of work use होता है, right? वो validate करते हैं कि वो transaction valid है कि नहीं, कि blockchain पे add करूँ कि नहीं करूँ. Right. So for example, अगर तुम समझो मैंने आपको 1 Bitcoin भेजे, तो इसी को तो वैलिडेट करना पड़ेगा कि मेरे पास 1 बिटकॉइन था वॉलेट में, हाँ, इन ऑर्डर टू सेंड इट टू यू. तो ये जो वैलिडेटर्स रहते हैं उसके वजह से ही ट्रांजैक्शन स्मूथली जाते हैं. अगर कम वैलिडेटर्स रहेंगे तो ट्रांजैक्शन अटके रहेंगे. मेरे ट्रांजैक्शंस कोई वैलिडेट नहीं करेगा, ब्लॉकचेन में ऐड नहीं होगा. And that's why there are a lot of side chains. जैसे इथीरियम पे अगर स्लो जाता है या गैस फीस बहुत ज्यादा हो जाती है, तो एक साइड चेन है which is Polygon. तो आप Polygon यूज कर सकते हो in order to do it faster and have a lesser gas fees to be paid. Solana पर प्रॉब्लम ये है कि there aren't a lot of validators, and when you send some transactions, वो पूरा ट्रांजैक्शन के मेम पूल में भरे पड़े रहता है.
हाँ, and it's very slow and अगर बहुत सारे transactions आ गए तो पूरा network ही बंद हो जाता है. राइट. Of course, it's not slow in terms of like the transaction speed and all, because transaction speed is very fast on Solana. But in order to maintain that transaction speed, you need to have that level of validators and stuff. Plus, because Solana पे centralized है बहुत Right. चीज, तो उससे क्या हो जाता है कि आई गेस देर आर ओनली 11 or 12 people who manage all of these things. I guess 12 validators are there on Solana who validate all the transactions. तो अगर उसमें से थोड़े लोग का भी डाउन टाइम आ जाता है तो पूरा नेटवर्क congested हो जाएगा. Right. You just have to hack these small nodes, and that's all that you need to do in order to take down the entire network. Right. And that's why I feel that, you know, centralized approach has its own this thing, Demerits. bad. Yeah. Yeah, exactly. So security is obviously lacking when it comes to Solana. The speed is fast, security is not that much. Cool. I sort of agree to that when it comes to NFTs also. Solana quickly एक secondary ये बन गया था solution for जो NFT artists जो ETH पे या जो projects ETH पे लॉन्च होने की काबिलियत नहीं रखते थे, और एक बहुत अभी भी एक्टिव मार्केट है when it comes to checking, when it comes to seeing the NFT marketplaces that are actually running on blockchains. Till that, because it was very easy for the artists or people who don't have developer knowledge to understand and deploy. That's why it made more sense to us, I guess. And that's what attracted a majority of Solana users who were not in the form of developers, जो कि actually artists थे या कोई और ticketing agencies या utility based companies जो which were out of basically the tech that is actually being used in the background in Solana. But as developers, as developers have rightly pointed out, as I have spent time with you and we went to the Solana event in Bangalore also, वहाँ पे भी बहुत सारे डेवलपर्स का यही कहना था कि हम बस यहाँ पे एक्सपोजर के लिए या फंडिंग रेज करने के लिए आए हैं, and that it was actually very hard and not a lot of people knew how to leverage and use Solana's ecosystem and technology or their whatever language they have to actually program and make stuff on the chain. So that tells us that Solana or any other blockchain that actually wants to compete with Ethereum or the likes of Ethereum needs to have a very understandable and programmable language if they want to compete at that level or become a layer 2 solution for, you know, Ethereum or whatever it is. So plus the education part is Yeah. lacking a bit. I Yeah. feel Solana is working on it, but still I don't think that the developer documentations are that good, Yeah. or you know, the support is not that good, Yeah. especially because there aren't a lot of developers Yeah. working on Solana. Yeah. That's the main Yeah, it's thing. very vague. I agree with you on that. One of the things I felt after attending the Solana event was Solana is basically, I got the vibe that Solana was basically trying to get traffic onto their system. Basically, they didn't Yeah. care who was coming there, what was happening. They were just ready to do anything and everything to get volume of people actually interested in Solana, regardless of if they get interested in Solana NFTs or the kind of investors that are associated with Solana or Solana projects, or development opportunities. That was their main aim, to get traffic. Their main aim was not to improve their already existing system, which if they would have improved, would have made more secure or would have made more understandable to developers. It would have, in my opinion, catered to more audiences coming towards Solana. तो गाइज ये एक और चीज़ था कि Web3 सिक्योरिटी रिलेटेड एक इशू थी. अगर आप लोगों ने भी फेस की है और यू हैव एनी ओपिनियंस ऑन दिस, यू कैन कमेंट अबाउट दिस इन द डिस्क्रिप्शन बिलो. Very nicely explained by Ali, and also I gave my opinions as a non-developer. Moving on to a much lighter topic, something that we all should look up to and be happy about and not grim. कि एक बहुत अच्छी न्यूज़ आई है इंस्टाग्राम की तरफ से. A leading Web2 company which is venturing into Web3 in terms of NFTs, is that Instagram ने
I think if I'm not wrong, maybe Ali, you can pull up an article regarding this. Sure. Is that 100 countries से ज़्यादा अभी Instagram NFT support extend करने वाला है. And I mean, if this happens, it's like the next big thing in NFTs, because one of the giants, which actually is working under Meta, under the X Facebook banner, is actually venturing into a different side of NFTs, which will be away from the idea जो Meta का idea है, metaverse का, और NFTs का और Web3 का. Instagram, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे इन्होंने डेमोज भी दिए हैं. ये I believe so they will be, yeah, I believe they will be enabling, I think, Polygon NFTs also, and क्या कहते हैं इसको, Ethereum NFTs also. Make it cheap, make it more desirable to people, and actually give people that chance of Ethereum and Polygon, as you can see there, right? Yeah. With Flow and Solana coming oh, please soon. don't go Solana, guys. Flow and Solana भी आ रहा है. Yeah, Flow chain. And, Yeah, Flow chain is understandable. यहाँ पर this is a major thing. Third-party wallets compatible for use will include Rainbow, MetaMask, Trust Wallet, Coinbase wallet, and Phantom coming soon. Cool, Okay. cool. The Coinbase wallet, Dapper and Phantom will be there, but अभी के लिए MetaMask और Trust Wallet तो use कर सकते हो. Amazing, amazing. So guys, one of the things I also feel इसमें ये है कि like एक तो क्योंकि क्या कहते हैं इसको, Instagram की जो ऑडियंस है, इन लोग को ये जब कॉन्सेप्ट आएगी ना, कलेक्टिबल्स की जब कॉन्सेप्ट आएगी इनके पास, डिजिटल कलेक्टिबल्स, डिजिटल एसेट्स, जब फॉर एग्जांपल कोई अपने फेवरेट एक्टर का या कोई अपने फेवरेट इन्फ्लुएंसर का नेक्स्ट पोस्ट खरीद सके, और फिर उस पोस्ट पे अपनी ब्रांडिंग कर सके, when that kind of utility starts coming, then people will realize ki, oh, this is cool. So like, instead of directly going via a marketing agency like Shebang, for example, we can directly buy somebody's post off of their Instagram feed, use it as an IP, जो कि हम लोग ने पहले डिस्कस किया IP क्या होती है, use it as an IP to promote your own brand, your own market, right? With the audience that is coming there. This is some utility जो मेरे दिमाग में अभी आ रही है. क्या कहते हैं इसको? As you can see, today we are starting international expansion to 100 countries in Africa, Asia Pacific, the Middle East and Americas. So Africa and Asia Pacific. Flow has been included. वो actually थोड़ा पुराना post था. Flow has been included now, and अभी सिर्फ अमेरिका में नहीं है. They started off with America, but now it's there in across 100 countries now. Right. Is the same thing as when you remember back when Twitter ने ये किया था, वो जो NFT integrated profile pictures. It's a similar kind of feeling जो मुझे अभी आ रही है कि like NFTs are the future. Collectibles which have real world value and utility are the future. और Web2 companies actually इसमें interested है ज़्यादा, how they can maintain ownership and give and sell ownership and use that to their best of their advantage. Anything you would like to say इस पे Ali? What do you think? This seems pretty big, right? I think see, the problem is when we were making cryptos and NFTs and all of these things, right, we were not thinking of adding a Web2 tech giant like Meta or Facebook control over it. Yeah. Right. हमें ये नहीं चाहिए था कि Meta will start having their, जैसे जब उन्होंने मेटावर्स के बारे में बात की थी, तभी भी बहुत एक बड़ा बैकलैश आया था कि all of these things are supposed to be decentralized. It's not supposed to be centralized. तो यहाँ पर भी मुझे तो लग रहा है कि the main problem is they will bring in centralized approach to it. Yeah. Otherwise, they won't be able to make money out of it. I mean, one of the things they could do is what they are planning to do with Meta and the digital assets or NFT that are going to be exchanged inside the Meta universe or blockchain or whatever they're going to make is percentage fees on per transaction, right?
Like Yeah. that's one of the things that they are going to heavily sort of And percentage fees, I think the last time we saw an article, it was, I think, 40, 40%. 45, 46%. Yeah, it was too much. Exactly. Yeah, yeah. Exactly. That is how much they were taking from Per creators. transaction of the So, NFT. yeah, so that is quite huge. And I don't think, if you're making things simpler for people to get onto Web3, Right. take fees. Okay, that's fine. But 40-45%, that's too huge. And apart from that, I think ये सब जो भी चीजें वो कर रहे हैं, if you try to integrate blockchain with it, तुम पैसे नहीं बना पाओगे. Yeah. That's the whole point of it, right? Yeah. कि तुम अगर कोई सेंट्रल कंपनी आती है, वो बोलते हैं कि स्टार्ट integrating, say, Ethereum, Polygon, and all Yeah. of these blockchains on our platform, you would not be able to make money until and unless you are taking the transaction fees. Transaction Yeah, fees. so I feel because these tech companies, they are trying to get onto NFTs and metaverse and stuff like this. मुझे लग रहा है कि the crowd will not like it. Yeah. Because I don't like it Okay. personally. Or if they were, building solutions to help people from Web 2 to Web 3 transition, from Yeah. Web 2 to Web 3, that is perfectly fine. But यहाँ पर वो पूरा गेम ही चेंज करना चाहते हैं. Yeah. How do they make money? They make money through collecting data on users and selling them off and Right. using it in different ways, right? Hmm. ये चीज Web3 में नहीं होती है. Web3 में कम्युनिटीज से तुम पैसे बनाते हो, एंड तुम कभी भी एक बड़ी लार्ज कंपनी बन के इतना ऐसे वो नहीं कर सकते on Web3. Right. That is the whole point of it. I think तो Yeah, I think I agree with you. I'm starting to मुझे भी थोड़ा लग रहा है जो अली कह रहा था, जो हमें इनिशियली मेटा के साथ लगा, वो तो सब NFT आर्टिस्ट Yeah. को, डेवलपर्स को, सबको सेम ही चीज लगी, बिकॉज दैट अमाउंट ऑफ ट्रांजैक्शन फीस फॉर व्हाट दे वर प्रोवाइडिंग इन दैट मेटावर्स वाज लाइक, मतलब उसका तो कुछ फायदा ही नहीं था. इंस्टाग्राम के I साथ think क्या आगे जाके ये सब जो भी NFTs हम डालेंगे Instagram पे, that would be integrated with metaverse, जो Meta बनाएगा, and then वहाँ पर कुछ I guess कुछ utility होगी, and that's why they are doing If that happens, then obviously I'm against it, right? But मुझे जब Instagram ने ये किया ना, मेरे दिमाग में instantly क्या आया as an artist, as somebody who understands branding and how brands work a little bit, I started to, मेरे दिमाग में opportunities आए कि यूटिलिटी के बारे में मैं सोचने लगा, नॉट अबाउट अरे अगर इन्होंने इतना ट्रांजैक्शन फीस चार्ज किया फिर तो फायदा ही नहीं रहेगा. इन माई माइंड एनीथिंग क्रिप्टो और एनीथिंग NFT, आई स्टार्ट थिंकिंग अबाउट यूटिलिटी फर्स्ट, राइट? सो व्हेन इट कम्स टू यूटिलिटी, व्हेन वी रिमूव द एस्पेक्ट कि इंस्टाग्राम इससे पैसे कितने कमाएगा, कैसे कमाएगा या क्या करेगा, क्या व्हाट्स द कैच, when we just look at the utility, it's pretty big utility, right? When we talk about brands directly buying NFTs of the posts that celebrities are posting, or brands buy NFTs of the posts that small creators are posting, and sort of put their branding on that content that is doing really well, rather than having to make tailored content for their own brand, right? So I feel like वहाँ पे opportunity wise there is a big opportunity. If the Instagram NFT is away from the meta's idea of what NFTs and metaverse should be. So basically Instagram will become an interactive NFT marketplace, right? That's what it will become. मतलब you can send messages and stuff also while you can buy and sell NFTs. वो हो जाएगी Instagram, right? You can just see videos and like the videos or upvote the videos or whatever, whatnot. एक चीज मुझे rightly ये लगी कि जैसे you said that Web 2 companies है, हम लोगों ने पहले से इनको negate करने की कोशिश की. So basically जब Web 3 की idea बन रही थी, Web 3's idea was we don't want nothing to do with Web 2, and we just want to build Web 3. We can make it bigger and better. But it's a web, right? It needs communication. When we talk about communication, when we talk about building audience, having people in the network, Web 2 has those methods nailed, right? So
we forgot about There the is already the huge communities formed on Web2. exactly. तो बस अभी उन्हें यहाँ पर लाना Right. है. That's So the whole point. while we were running behind this concept कि यार Web3 में collaborative efforts से आगे बढ़ते हैं लोग, collab, we forgot to collab with Web2, right? We forgot to Yeah. make Web3 a collaborative effort with Web2 plus additional features like plus decentralization. So we forgot to make Web3 Web2 minus certain features plus decentralization. तो ये चीज अगर लोग इस हिसाब से सोचने लगे कि वी नीड वेब टू कंपनीज, हाँ, अब गलत कहाँ पे हो रहा है कि वेब टू कंपनीज को ये पता है कि वी नीड देम, सो नाउ दे विल डू वॉट एवर दे हैव in their power to leverage their technology or their service to provide that for Web3 solutions. तो यहाँ पे मुझे लगता है कि अगर Web2 companies जिनकी हमें ज़रूरत है, मेटा है, गूगल है, अगर ये इन लोगों ने बहुत ज़्यादा ट्रांजैक्शन फीस चार्ज करना स्टार्ट कर दिया ये वो, तो Web3 को फुल्ली फॉर्म होने में या एक नए गूगल को बनने में बहुत टाइम लगेगा, बहुत वक्त लगेगा. तो Web3 का जो आइडिया है उसको सॉलिडिफाई होने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है. और ये NFTs की रियल यूटिलिटी हम लोग तब तक एंजॉय नहीं कर पाएंगे. Because like the food is very good, but it's too damn expensive. Like it's not worth it, you know? So it's like that. Yeah. So guys, that was basically a slightly lighter note from what ये पूरे पॉडकास्ट पे हम लोगों ने डिस्कस किया सिक्योरिटी से रिलेटेड एंड यू नो NFTs में और Web3 में मोनोपोली होने के रिलेटेड इंस्टाग्राम और मेटा जैसे Web2 कंपनीज के यू नो रिलेटेड जब हम बात कर रहे थे. वी कैन फाइनली एंड द पॉडकास्ट विद अ स्मॉल अपडेट ऑफ 3 मिलियन. अली, आप लंदन में हो अभी. हाउ इज लंदन ट्रीटिंग यू? It's good. I'm enjoying here. And yeah, right now तुम्हें कुछ भी vlogs देखना है चैनल पे जाओ, देखो थोड़े vlogs. Yeah guys, तो वहाँ पे सब शेयर किया. Ali is making content, dropping content like fire in the last week. So yeah guys, so 3 million के बारे में quickly बात करते हैं and we can wrap up the podcast. Any updates on 3 million, Ali? So right now I have started तो मुझे उस पे एक blog post भी बनाना था. So I've started learning about the backend, and because I was doing it on Next.js, तो वो एक front end plus एक back end framework है. Yeah. So I was learning about the back end part of the things and वही सब figure out कर रहा हूँ. You have made the UI, right? I am So starting on will it. you talk about that? Yeah, basically I'm starting on it. If you check out the Instagram, we have dropped like a slight, very, very slight sneak peek on Ali's story. If you check it out on time right now, within the next day, obviously, when it's going to get uploaded, is that UI का थोड़ा सा structure finalize किया है, color scheme finalize, you know, चल रहा है वो process. जब एक बेसिक स्ट्रक्चर आ जाएगा उसके बाद हम और एलिमेंट्स ऐड करेंगे. वील ट्राई टू मेक इट नॉट टू जैम्ड, नॉट टू क्रैम्ड, वेरी इजी टू नेविगेट, easy to list your own event, and easy to also look at the events that are in your vicinity, outside your vicinity. Hopefully one day my vision like for 3 millions UI and also 3 millions like service in general is that कि ये इंडिया के बाहर जाए, you know, international overseas हम लोग events के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म दे पाए जहाँ पे वो ना सिर्फ मार्केटिंग कर सकते हैं अपनी, बल्कि ऑडियंस भी ला सकते हैं और यू नो एक आइडिया रहेगा लोगों को कि यू नो कि कहीं पे भी जाना है, Web3 इवेंट देखना है, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, लेट्स गो टू 3 million, you know. So that's my UI. So एक vision for the UI and the service. तो बस वही चल रहा है अभी. It will still take time. एक process है. You know, we want to make it good. और इतना भी time नहीं लगाएंगे कि you know that we don't deploy it only. You know, obviously we'll make something and we'll keep making changes. You know, passion है, सब है. अली भाई भी काम कर रहे हैं. तो that's the update, guys. Ali, anything else we got to cover to say? I think we've covered everything. Enough. Hope you guys enjoyed the podcast. Hope you guys follow the journey of 3 million on Ali's YouTube channel and also on our Instagram profiles. Hope you like the podcast. Share your thoughts on WAZIRX, on Binance, on all the catastrophe, the conundrum which is going on with Solana, and also your thoughts on
Instagram's adoption of NFTs in over 100 countries. आप लोग को क्या लगता है, आप डिस्क्रिप्शन में ज़रूर डालिएगा. If you want, you can email us with any topics that you have or DM us on Instagram, and we will surely discuss it in the next podcast. And until next time, take care. Blockchain Boys signing out. Bye-bye.